What if I tell you guys that I deployed around 2 to 3 lakh rupees in two swing trades and made over 65,000 rupees? These are my old trade. First of all, the edge, the setup remains intact till date. So you guys can see Venus Remedies and Morapian Lab, and the same Morapian Lab right here. Again, let's refresh. 20,000 rupees of profit in Morapian Lab here and 20,000 here. So a total of 40,000 rupees I've booked in two parts, and Venus Remedies 25,000 rupees. Before we start this video guys, आपके सामने मेरा full channel है. अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो अभी के अभी subscribe करो. I've shared many more swing trades breakdown जिनमें मैं profit book कर चुका हूं. So the stock was making consistent lower lows right here. You guys can see consistent lower lows. This was the part where the stock started making higher low formations, but see, you never know that this will be the last base. Okay, you can never guess the top, you can never guess the base, right? So but eventually if it starts making higher low formation, that's where the base is, right? The bottom is, and then it started creating a broader base. You guys can see this was a rejection, then after the breakout this was acting as a support. So एक supply demand conversion zone भी यहाँ पे create हो रहा था इस तरीके से. A beautiful resistance, a beautiful breakout, a beautiful support. Now that's not my setup. My setup lies in the trend lines and the hidden lines formation. So this is my trend line, this is my counter trend line, and the stock is getting rejected at that area. I'm gonna make one hidden line concept also here, and we'll get some more touches there so that the hidden line is powerful enough. So that's the hidden line. The stock created a lower low here, again a low was created, and then it got rejected with a wick at this area. You guys can see strong wick rejection, two insider bars. Now whenever that thing happens at a certain area, this specific area where the stock is taking supply demand, the stock is getting rejected from the CT, the stock is getting rejected from the hidden line, and the stock is making a mother bar insider bar setup. So see how many things are happening, 4-5 things are happening at the same place. This is known as a confluence of all the ingredients. Okay, so what I want at this area, I want the stock to move up like this and close. Closing is important. If that happens on Monday, I will just sit, and if it booms, I will skip the trade. If this stays intact and gives me a good risk reward ratio, then I will at least 1:1, then I will definitely take part in this trade. But if the stock moves down, I will definitely leave the stock. Now let's see what happens. So this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and that's where the stock closed finally. Okay, on the Friday. So Friday wise, if you see, that is where I entered exactly. Okay, now you guys can see if I keep a stop loss of the overall candle, that will be 20%. So I cannot keep that much of stop loss, right? So I will keep a very small stop loss of 10 to 11%. Why? Because you guys can see this was the mother candle, and now the stock has broken that mother bar, also the previous high, also the hidden line, also the CT. Okay, now if the stock again comes back, that is not a retest it will be taking, it will be coming back inside. Okay, it will be a fake out. So this is not a retest. Okay, I have not seen retest like this. Most of the time retest happens at the CT like this, but that will be like a 20% fall from that area. So I cannot put that much of money. See you guys, I put 2.2 lakhs in this particular trade. I cannot put that much, but I can definitely risk 20k in this trade. Further, so 2 days into the game, 3 days, 4 days, 5 days into the game, and now I'm red. So 5 दिन मैंने wait किया, and now I am red. तो 5 दिन का wait is equivalent to this redness यहाँ पे, and आप देख सकते हो कि on the 6th day it gapped up, lower wick rejection, and a solid candle yet again, and then there is this candle that comes into the picture. But I have not exited the trade because that was a बहुत तेज कभी कभार रिजेक्शन आ जाता है, तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ. सो अगेन अ रेड डे, एंड फाइनली दिस इज द डे दैट आई एग्जिटेड, 24 November. You guys can check that out. 24 November that I've booked Venus Remedies from my portfolio. Now guys, let's see the second trade. The second trade is Morapian Labs. Again, you guys can see द जो प्री एनालिसिस होता है वो क्या है, वो मेन थिंग होता है गाइज. कंसिस्टेंटली लोअर लो फॉर्मेशन यू गाइज कैन सी, एंड देन यहाँ पे जब एक हायर फॉर्मेशन क्रिएट होना चालू हुआ, यू गाइज कैन सी कभी भी यहाँ पे द स्टॉक नेवर ट्राइड टू क्रिएट अ हायर लो फॉर्मेशन और अ बेस. ये डायरेक्ट एक अपमूव आ गया, तो वो पंप एंड डंप ही क्रिएट हो गया अगर आप देखो ध्यान से. देन फाइनली इट क्रिएटेड अ हायर लो एंड हायर लो. सो जब ये हायर लो वापस बनाने लग गया, then the stock came to my radar. यहाँ पे I definitely knew the stock was making highs
बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज एक डायरेक्ट अप मूव वर्सेस अ कंसिस्टेंट हायर लो फॉर्मेशन बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में. मेरे सेटअप्स, आई फॉलो हायर लो फॉर्मेशंस, आई फॉलो मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड नॉट दीज डायरेक्ट पंप एंड डंप्स. इनको मैं नहीं ट्रेड करता बिल्कुल भी. सो आई एम गोना थ्रो माई लाइन फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज दिस सीम्स टू बी अ बेटर काउंटर ट्रेंड लाइन फॉर मी. देन आई एम गोना मेक अ ट्रेंड लाइन एट दिस एरिया, यू गाइस कैन सी. ओके, नाउ गाइस अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट आता है. सो आई टुक दिस ट्रेड इन टू पार्ट्स, एक आफ्टर द ब्रेकआउट एंड एक बिफोर द ब्रेकआउट. ओके, सो बिफोर द ब्रेकआउट वाली ट्रेड के बारे में बात करते हैं, विच इज अ लो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. सो दिस वॉज मंडे एंड आप लोग देख सकते हो कि द स्टॉक हैज ऑलरेडी ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन. ओके, इट्स ट्रेडिंग अबव दैट एरिया. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि जैसे ही ये मूवमेंट देना चालू करेगा, बट अगेन देयर वॉज अ रेड कैंडल. बट ये वाली जब कैंडल बनने लगी वेयर द स्टॉक वॉज फाइनली मूविंग अप, सो आई एंटर्ड. So you guys can see this was my entry. 4% was my risk. 1:1.5 risk reward ratio. And 7% was my target. कि 7% के around में निकलूंगा. And this is Wednesday. Then this comes out to be Thursday. And Friday को मैंने इस candle पे अपनी exit मार दी. ये जो strong wick rejection आया 24 November, again you guys can see 24 November was the exit here of this particular trade. 3.2 lakhs से मैंने entry करी थी. बहुत small stop loss था इस trade में. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. जब मैंने ये अपनी ट्रेड यहाँ क्लोज करी एंड वीकली टाइम फ्रेम पे मैं गया, आई सॉ दैट देयर इज अ ब्रॉडर ब्रेकआउट, देयर इज अ ब्रॉडर पिक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ मी. सो व्हाट आई डिड वाज कि जो भी मैंने प्रॉफिट इससे कमाया है उस प्रॉफिट को मैं पूरा का पूरा रिस्क लूंगा एंड आई विल प्ले अ बेटर स्विंग ट्रेड हेयर फॉर द ब्रॉडर टाइम फ्रेम. तो डेली टाइम फ्रेम को मैंने उस तरीके से प्ले आउट करा. नाउ आई विल जंप टू द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ दिस ट्रेड एंड आई विल शो यू गाइज हाउ आई बुक्ड दिस ट्रेड. लेट्स सी. तो 20,300 रुपीज यहाँ बुक हुए. 2 लाख से मैंने एंट्री करी है. इसका अब एनालिसिस चालू करते हैं. सो दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर. सो वहां मैं अपना 20,000 बुक कर चुका हूं ऑलरेडी एंड नाउ आई विल प्ले द ट्रेड अगेन. सो मैंने 10% का रिस्क रखा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 20,000 इस ट्रेड पे बना चुका हूं. सो इफ आई लूज 20,000 इन दिस ट्रेड नाउ, ओके, दैट विल बी अ जीरो, मतलब नो लॉस नो गेन. एंड इफ आई विन आई विल मेक 40,000 एंड दैट्स व्हाट आई डिड. तो नेक्स्ट वीक चालू होता है. ओके, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं फॉर बेटरमेंट. सो दिस इज द नेक्स्ट वीक. स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेट होता है. स्टॉक गोज लिटिल रेडनेस की तरफ जाता है. दैट मीन्स कि मैं थोड़ा सा माइनस में हूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप एंड दैट्स वेयर आई एग्जिटेड माय ट्रेड. एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द ट्रेड. गाइस, फील फ्री टू check out my shorts on my YouTube channel. I have made multiple swing trading breakdowns where I've booked profits, losses, every single thing. You guys can go there, check out my shorts. Definitely watch my videos on my channel. And if you guys have not followed me yet, then this is my Telegram where we discuss a lot more things. And by the way, I just posted out before uploading this video that how much profit I would have booked in these trades, and that I'm revealing tonight. So most of the people have already guessed it right. It's around above 65,000 rupees. So yes, good luck with that. Many things like what are the fake people doing out there and what are the trading setups that you should follow. Posts like this, very good, amazing price action type post, playlist of my previous channels, everything you will get on my Telegram. And definitely you guys can leave a comment on my YouTube channel below that how was this video. If you're not a part of this family, this #hammer swing trading family, then guys, click on that subscribe button. Let's go for 8,000 subscribers. Share it with your friends, share it with those people who are not making profit. Tell them that they can.